Today's video is about a new topic which is experimental design. Now, what is experimental design? You know that chemistry is not about the chemical products or just studying about them. Scientists do perform a lot of experiments in the laboratory which tell them that what is the nature of a substance, how can we use a certain substance for certain purposes. So this all comes in experimental design. अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो इसका मतलब है कि हमने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है इन द लेबोरेटरी या साइंटिस्ट जो है किसी ने रिसर्च करनी है किसी पे तो यू नीड टू नो कि सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उसका रिएक्शन किस तरह हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl की तो वी नो दैट HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर गोइंग टू बी कि it has a low pH, it is corrosive, it will react with metals, it will react with alkalis. तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमने जब भी कोई रिएक्शन करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन की क्या क्या what are the going to be the boundaries of that reaction. Another example could be if you have to perform titration. Now what is titration? कि जब आप acid और base का reaction करवाएंगे and you're going to get what? Salt and water. So उसके लिए आपको पता होना चाहिए लैब में आप लैब में you enter the lab. It's the first day. You don't know what apparatus is used for what. So there is a lab attendant there or there are lab rules which are always written on the walls. So you go there first of all. तो आप you always go in a lab with a lab coat और आपको पता है कि that do not take your edibles inside the lab. और ये सारे यू हैव टू फॉलो द जिस तरह आप स्कूल जाते हैं तो आप सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, इसी तरह जब आप लैब में जाएंगे तो यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स दैट आर रिटन देयर. सो आप जब लैब में एंटर हुए यू डोंट नो व्हाट इज एसिड बेस टाइट्रेशन. आपने कभी यू नो व्हाट इज एन एसिड एंड बेस बट यू डोंट नो व्हाट इज टाइट्रेशन. सो आपका लैब अटेंडेंट आपको बताएगा कि टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस in which we are going to react acid and base together and you're going to get salt and water. तो आपको नहीं पता कि एसिड कहाँ है, एल्कली कहाँ पड़ी है, किस अपरेटस में लेना है, कहाँ किस में कितना एसिड लेना है, कितनी एल्कली लेनी है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है टू सी कि आपका एंड पॉइंट आया है नहीं. सो दिस ऑल कम्स अंडर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. First of all, you always plan your lessons while going into the laboratory. And before doing any reaction, you should know कि जो भी आप reaction कर रहे हैं, बेशक आपने mixing करनी है, आपने measuring करनी है, you have to heat something. तो हर चीज़ के लिए there is different apparatuses that are present in your laboratory. So in this chapter, we are going to see, this chapter is going to take you into your chemistry lab. So this is very interesting because you're going to learn a lot of things that you see every day, but you don't know how to use them. So regarding this video, if you have any query, do let me know in the comment section. And if there is any interesting fact or any interesting experience that you have gone through in your chemistry lab, I would love to know that in the comment section.